नमस्कार, तर्क ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रवेश की प्रक्रिया है उसमें जो कुछ बदलाव हुए हैं उन बदलावों के बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर पे ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए या हम कहें सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ख़ास होने जा रही है जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए दाखिला लेने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। और आप सभी को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में देश भर के छात्र यहाँ आते हैं और पढ़ने का सपना होता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारा प्रवेश हो जाए। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में मतलब पिछले साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में कट ऑफ लगती थी और वो कट ऑफ आपकी स्कूल की जो मार्किंग है, स्कूल के जो मार्क्स हैं, अंक हैं, जो भी आपने प्राप्त किया है स्कूलों में और अलग अलग स्कूल बोर्ड्स द्वारा जो आपको नंबर दिए गए हैं उन पर कट ऑफ लगती थी। लेकिन इसको लेकर बहुत सारी बहस होती थी। इस बहस का निपटारे के लिए ये मांग की जाती थी कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए जिससे कि ये जो योग्यता आधारित प्रवेश है उसको बढ़ावा मिल सके। तो तैयार हो जाइए, दिल्ली विश्वविद्यालय सहित तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस बार एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये दाखिले के अंदर एक प्रशासनिक परिवर्तन है जिसको आप कह सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो देश भर में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा और जिसके तहत फिर आपका दाखिला होगा। तो इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे कि दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में क्या होगा, कैसे आप कर सकते हैं और कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। तो इस विषय पर जानकारी के लिए मेरे एक मित्र कुंदन कौशल दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में इस समय पीएचडी कर रहे हैं। वो इस विषय को आपको बहुत सरलता से सरल भाषा में समझाएंगे कैसे आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो कुंदन, आपका स्वागत है तर्क ज्ञान पर। मास्क हटा सकते हैं, दिल्ली में अब मास्क पर जुर्माना नहीं लगेगा। खैर, तो कुंदन, जैसा मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस DU से पीएचडी कर रहे हैं और इस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है, पूरा जो एकेडमिक में एक हम कह सकते हैं कि योग्यता आधारित प्रवेश परीक्षा होगी, उसके बारे में बहुत आसानी और सरल शब्दों में आपको बताएंगे, बहुत लाभदायक होगी। तो कुंदन, अब तर्क ज्ञान का मंच आपके सामने। Namaskaram everyone, and a big thanks to my colleague and my classmate Digvijay Vishwakarma for the platform, and we both have been quite curious and excited about this initiative so as to make all of you or all of the aspirants well aware of the things and well aware of the procedures lying ahead or coming ahead in the form of Central University Entrance Test, which will start taking its application hopefully by tomorrow. So as well introduced and well briefed by Digvijay earlier, so this is going to be the very first year and very first session from where a new pattern of entry scheme or say a new pattern of admission scheme has been brought in, and that is also named as Central University Entrance Test with effect from 2022-23 session. Now, just coming straight to the pattern and straight to the exam pattern which it will consist of and which it will comprise of. तो सबसे पहले Central University Entrance Test 2022. Actually, I would not go into the background details and the key things which led to the introduction of this common entrance test, which is Central University Entrance Test. Rather, I shall specifically, and whenever I cite any data or any information, I always refer it to the Indian Express, where I have got the information from. So initially during the admissions in 2020-21 session, it was found that there were large number of students being admitted to the university, though based on the 12th criteria or 12th marks, but they were from a particular region or particular territory here within the Indian states or here within the India.
This, created a lot of confusion in the minds of the aspiring students as to how to cope up with such a situation where an equivalent or equality of opportunity could be provided to them, and they can also compete with those meritorious students from different parts of our country, so as to get admitted into the premier universities like, of course, University of Delhi, Jawaharlal Nehru University, Jamia Millia Islamia, Ambedkar University, and so much and so on across the country. हमारे यहाँ 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं. We are all, and we should be aware of that. So now it has been initiated that the admission to those universities will be based on the merit and the score secured in the Central University Entrance Test, which begins from this session and this year onwards. So what is the pattern, and what are the requirements for the CUET 2022-23? By now, not only central universities but also several state universities and of course around 10 private universities have accepted the proposal being drafted by the UGC and in formulation with the NTA. They have accepted to this CUET 2022-23. अब मैं सीधे I shall jump to the pattern part of the entrance test. So the test will consist of 4 sections in all, and 3 sections where the first section will have 2 subsections. I should simplify this in this way. पहला सेक्शन जो होगा उसी में सेक्शन 1 and section 1A और section 1B होगा. Second section remains the second section. Technically that will be the third session, and the fourth session will be named as third session. That is, first session comprising 1A and 1B, then the second session, and then the third session. Now, what happens in the first session, 1A, 1B, and in the second and some subsequent sessions? So, पहले सेक्शन के A पार्ट में candidates will be required, and that is mandatorily required. It is a compulsory section. So the test will be of 45 minutes comprising 50 questions, in which you will have to attempt at least 40, though there is an option of 40 in the test, but there is not an option to either leave that section or to bypass that section. So that remains a mandatory section 1A, जिसमें आपको इंग्लिश के अलावा 13 और इंडियन लैंग्वेजेस में योर एफिशिएंसी और योर मेरिट विल बी टेस्टेड. 50 क्वेश्चंस, 50 सवाल, 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे. 45 minutes will be the time allotted to you. Then the test will move on to this section, second section technically, but formally as 1B. वहाँ पे वैसे aspirants who want to pursue foreign languages from the universities concerned, they will have to appear for the test and they will take the test, and again you will have to choose from 19 options. There are plenty: Russian, Spanish, French, and several others. Then comes the second section, that is technically the third section, third part. Now here is the most important aspect lying within. Third section में you will be required to attempt questions specific to the domain subjects, and you will be given a list of 27 such subjects, in which you can choose 6 major subjects which you wish to apply for, or which you wish to pursue graduation in, because the test is for the graduation students, graduation seeking students. So 6 papers आप टिक करेंगे, and then your proficiency will be tested in those 6 papers during that session. Now comes the fourth section, technically the fourth but formally the third section. And in the third section, though it is not by now it has not been made mandatory for all of the aspirants, because this will be
डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी यू सीक टू टेक एडमिशन इन, और जो यूनिवर्सिटीज़ उस चीज़ को मैंडेटरी करेंगे दैट दिस जनरल टेस्ट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशंस इन XYZ यूनिवर्सिटीज़, then they will have to appear for that section and that session, and that session will be just a general test, and the syllabus and the further clarification will come out in the meantime before the test, before NTA conducts that test, which is hopefully to be conducted in the first week of July. Till now we get the information that it will be conducted in the first week of July. So in all, if I just sum it up, there will be जैसा कि मैंने बताया, section 1A, 1B, then section 2, then section 3. Section 1A mandatory for all of us, for all of the aspirants, and testing your language proficiency or the medium proficiency. English being the compulsory, you will be provided an option of 13 other languages which you may choose from. Then section 1B, where foreign language graduation seekers will be applying or choosing for that option. Then section 2nd, the domain test, the specific subject which you want to pursue graduation in. And then section 3rd, or technically 4th, where any university or any university will make you appear for that test for the general assessment for their admission requirements. So this is all. I hope and I wish with Digvijay all the best to all the freshers, aspirants, and we welcome in advance here at, of course, at Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Delhi. Thank you so much. We shall urge you to provide us the feedback so as we may improve and we may provide some more further information on the CUET 2022. Thank you. All the best. सबसे पहले तो धन्यवाद कुंदन, आपने इस बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया है। किसी और को अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर लिखेंगे और उसका जवाब हम वहाँ पर दे देंगे। लेकिन कुछ कुंदन मेरे सवाल हैं इसी से जुड़े हुए, कि जैसे पहला सवाल कि ये केवल रेगुलर स्टूडेंट्स को एंट्रेंस टेस्ट देना होगा या जैसे कि DUSOL है उसमें भी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, DUSOL वाले? ऑलराइट, सो बाय नाउ अभी तक दिस हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड कि any student seeking admission at the graduation level in the central universities, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला के लिए वैसे कोई भी स्टूडेंट और इसके एफिलिएटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हो या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस का कोई कोर्स हो, आपको CUET में बैठना होगा, अपीयर होना होगा। इसी से क्या अगर हम क्या इग्नू को इसमें कंसिडर कर सकते हैं? It is about the central universities and regular admissions. Still IGNU का भी formulations clear अभी नहीं आया है, but for the central universities ये clear है कि you will have to appear for the central universities entrance test. आपको SOL में भी अगर दाखला चाहिए तो आप एप्लीकेशन के टाइम पे आप SOL को टिक करेंगे, देन अगेन आप जब मेरिट आएगी उसके बाद ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। एक मेरा सवाल ये है कि इसमें मुझे थोड़ी सी मतलब असमंजस से आप कह सकते हैं कि उलझन है, वो ये है कि जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, तो लोगों की समझ में आएगा अच्छा चलिए ठीक है आपने उसके लिए टेस्ट दिया, आप उसमें क्लियर हो गए तो आपने ले लिया। लेकिन व्हाट अबाउट BA प्रोग्राम? ओके, तो इसको कैसे ठीक करें? क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि मैं BA प्रोग्राम पढ़ना चाहता हूँ तो मैं किस में दूँ मैं? राइट, सो दैट रिमेन्स वेरी क्लियर एंड इट रिमेन्स वेरी द सेम पैटर्न। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे यू विल बी प्रोवाइडेड एन ऑप्शन ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, आप 6 सब्जेक्ट्स चुन के रखिए। सो वहाँ पे आपको टिक भी करना होगा, डू यू वांट टू कंसीडर्ड फॉर द BA प्रोग्राम एज वेल, तो वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन के टाइम पे आपको टिक करना होगा। एंड देन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 27 मेन डोमेन सब्जेक्ट्स यू कैन चूज दोज 6 सब्जेक्ट्स जिसमें आप इफ़ you did not get to one regular subject, then you can choose BA program from those 6 selected subjects. ठीक है, लेकिन कुंदन मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? क्योंकि बहुत सारे सबके मन में ये सवाल है, ख़ास तौर पर जो स्कूल से पास आउट होकर आ रहे हैं उनके मन में ये सवाल है कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और कितने क्वेश्चन पर एक नेगेटिव मार्क, वो कितना नंबर कटेगा कितना नहीं कटेगा, ये दैट रिमेन्स $1 बिलियन क्वेश्चन, और ये बहुत पर्टिनेंट भी है।
But yes, by now this has been made very crystal clear. There will be a scheme of negative marking. You will be penalized for wrong answers. But scheme का भी पूरा क्लियर पिक्चर उन्होंने नहीं रखा है. ऑफ कोर्स एस्पिरेंट्स एंड एज एग्जामिनीज यू विल फाइंड इट एट द डिस्प्ले व्हेन यू अपीयर फॉर द टेस्ट. तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे 0.25 पर क्वेश्चन पर रॉन्ग आंसर और 0.50 per wrong answer. So it will vary or it will depend. But yes, again I underline and highlight the fact negative marking hogi, and that is why the whole concept of this CUET and merit has now come into picture. ठीक है. अच्छा चलिए, ये लेकिन इससे भी बड़ी उलझन वाला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ. मैंने वो बोलते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी है, नेचुरल साइंसेस नेचुरल साइंसेस पढ़ी है, या कुछ और एग्रीकल्चर में चला गया, या मैं बायोलॉजिकल मेडिकल साइंस की तरफ मैं कर रहा था. लेकिन अब मेरा मन कर रहा है, हो सकता है कि फैमिली बैक प्रेशर की वजह से मैंने केमिस्ट्री मैथ साइंस ले ली थी. लेकिन मेरा मन कर रहा है फ्लरिश करने का कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं तो अपने आर्ट्स में, हिस्ट्री में, ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ूं. तो अगर मैं स्ट्रीम चेंज करता हूं तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग और नॉट, या reduction of in marks. Okay, got it. Again, he is known for pertinent questions, or it seems that he is on your behalf, aspirants' behalf, or asking very valid questions to me. So yes, as before, you are very much free and you are very much independent to choose or change your stream or your subject in graduation. And yes, there are certain clarifications yet to be received from UGC and then NTA. But yes, they have not indicated towards any kind of deduction as well, because this is entirely based on the merit that you obtain in the test. So technically they are not asking for any deduction or reduction for any stream change or subject change. But they have mentioned, as I talked in the video, that in the third section they will take a general assessment test if the universities wish to, because there are 40-80 numbers and several other state and deemed universities joining as well. तो वो हो सकता है कि एक टेस्ट ऐड कर दें for the change of your stream, or maybe 0.25, 0.50 का एक deduction they may in their autonomy apply on the admissions. So that can be. But for Delhi University it is quite clear, you are not going to get any penalty or deduction for changing of your streams. ठीक है. तो चलिए, आप सभी को, जितने लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित दुनिया देश भर में जो हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और एक चेंज है, ये बदलाव है, तो जो बहुत सारा एक विवाद होता है कि डेफिनेटली कौन सा बोर्ड कितने नंबर दे रहा है. 100% आपको पता ही है कि दिल्ली में ही जो CBSE बोर्ड है 100% नंबर देती है, तो कट ऑफ ये आ गया, तो बहुत सारा प्रॉब्लम और बहुत सारी डिबेट होती थी. लेकिन खैर, हम ये कह सकते हैं कि इस एंट्रेंस टेस्ट आने के बाद से, CUT आने के बाद से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आने के बाद से सारी चीज़ें अब योग्यता पर आधारित होंगी. Exactly. To certain extent, I agree to disagree, but yes, of course, if aspirants have been demanding for such a merit-based admission, then let it be. और वो आ गया है. Now they can show their merit, proficiency, and they can compete as well. And of course, this has not been an outcome of a day or an overnight. It has taken an year. If you follow the Indian Express reports as well, so as Digvijay pointed towards, students from Bihar board, even toppers from the Bihar board school education board, BSCB, they could not find place in any of the colleges at University of Delhi. When I talk about they could not, then very few of them could. And they only could get to the humanities part or the courses that they did not wish to apply for. So ये बहुत बड़ा मसला रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में, and that is why report suggests कि there has been more or less admissions from specific regions or specific education boards in the universities, central universities, and that is why let us now play at the same playing level. Of course there are several other aspects behind this, but now since they are appearing just after 12th, so all have to just come and show their proficiency in the subject that they wish to be graduate in. Right. So ending at this,
दिग्विजय विल चलिए, क्लोज दी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हम दोनों की तरफ से डेफिनेटली ऑल द बेस्ट और फॉक्स। सभी के लिए है कि हम अच्छे से अपनी योग्यता के अनुसार प्रदर्शन करेंगे और निश्चित तौर पर जो अवसर से छूट जाते थे उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और दिल्ली विश्वविद्यालय में वो प्रवेश पा सकते हैं। तो जो इस वीडियो में कुंदन जी ने टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात की है, आप सभी उसको समझे होंगे। और भी कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वी आर ऑलवेज हियर, वी आर ऑलवेज हियर। मैं और दिग्विजय हमेशा हैं, और दोज हु आर इन दिल्ली और दोज हु आर अराउंड, दे कैन इवन मीट और दे कैन इवन कंसल्ट एनी टाइम एट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वी आर रिसर्च स्कॉलर्स एट द डिपार्टमेंट। एंड तो हम कमेंट बॉक्स में भी सवाल उनके ले सकते हैं और उन पर हम रिप्लाई करेंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से, और ख़ास तौर पर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि कि बिहार से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, केरल से हैं, सभी जगहों से, राजस्थान से हैं। तो ये सभी लोग क्योंकि आते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट देंगे और निश्चित तौर पर एक हम ये कहेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक पूरा जो माहौल है वो पूरा इट इज गोइंग टू बी मोर डाइवर्स नाउ। पहले होता था कि नहीं, सीबीएसई के सारे बच्चे यहाँ पर कब्जा कर लिए हैं और सब लोग ये हो जाता था। इवन ये कहा जाता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो सीटें हैं वो रिजर्व की जाए, जो दिल्ली दिल्ली में जो सीबीएसई बोर्ड के लिए। खैर अभी सब बातें नहीं होंगी, हमें कह सकते हैं आने वाले समय में अगर ये आगे कंटिन्यू होगा, खैर अभी शुरू हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये आगे बढ़ेगा और तो उससे दिल्ली विश्वविद्यालय का जो परिदृश्य है और निखरेगा और बदलेगा और बड़ा होगा। ऑल द बेस्ट अगेन। We shall come with later, upcoming some changes, amendments and news and updates. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो आप सभी से अनुरोध है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तर्क ज्ञान, अपने अन्य दोस्तों के साथ, अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर इस वीडियो को साझा करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उस पर ज़रूर प्रतिक्रिया दी जाएगी। थैंक यू दिग्विजय, थैंक यू। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू।